अतुल भाई। Yes. Preventive meet of Reva Lodge Vadodara, Rohit Lodge Ahmedabad, and Jyoti Lodge Mumbai, having today's topic Bharat Samaj Puja Purification Mantras Part 1. Welcome, Brother Sinde, Sir, Rajeshwari Ben Dave, Avnish Bhai Misra ji, and moderator Archana Ben Munshi ji, and all the members present in the meeting. We will go for universal prayer. I will first start and you repeat. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, life, vibrant vibrant in in every every atom. atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, Oh, hidden hidden light, light, shining in shining every in creature. every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden hidden love, embracing embracing all in all in oneness. oneness. May each who feels himself as one with thee May each Each who who feels feels himself himself as as one one with with thee, thee. know he is also one with every other. No, know he he is is also also one one with with every every other. other. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, I Shanti. request Archana Ben to start today's procedure. थैंक यू, Archana Ben, धन्यवाद। you are welcome in the meeting. धन्यवाद अतुल भाई, आप सबों का स्वागत है आज के एक बहुत ही स्पेशल वाले त्रिवेणी के एपिसोड में। आज हम भारत समाज पूजा, हम सभी के लिए भारत समाज पूजा बहुत ही प्रेरणादायक है, शांतिदायक है। तो आज हम जानेंगे कि ये ऐसा क्यों है, क्यों ये हमको शुद्धिकरण करता है, कैसे ये शुद्धिकरण करता है। हम भावना से तो जुड़े हुए हैं भारत समाज पूजा से, आज विस्तार से जाएंगे। तो आज समझाएंगे शिंदे साहब, मगर उसके पहले मैं आमंत्रित करूं इंग्लिश में उनका प्योरिफिकेशन ऑफ मंत्रा के लिए उनका छोटा सा परिचय। शिंदे जी, आप रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर हैं और आपने सांगली और पुणे में 37 साल टीच करा है। आप एक ऑथर भी रह चुके हैं, टेक्स्ट बुक्स आपने लिखी है जूलॉजी में और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। आप लाइफ मेंबर है थियोसॉफिकल सोसाइटी से और 1975 से आप टीएस से जुड़े हुए हैं। आपने बहुत सारे सेमिनार, स्कूल ऑफ विजडम के वर्कर ट्रेनिंग कैंप, स्टडी क्लासेस और वेरियस प्लेसेस पे आपने सब काम किया हुआ है। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं जो पब्लिश्ड हुए हैं थियोसॉफिस्ट में, वेकअप इंडिया में, थियोसॉफिकल डाइजेस्ट में। आपने बहुत सारे शॉर्ट टॉक्स भी दिए हैं और आपने इंटरनेशनल सिंपोजियम में भी, कन्वेंशन अडियार में जब कन्वेंशन होता है आपने वहां भी आपके बोला है। आप बहुत आपने कंपाइल किया है द वॉच टावर आर्टिकल्स ऑफ मिसेस राधा बर्नियर, वो पब्लिश हुआ था द वर्ल्ड अराउंड अस में। तो आप एक तो जीसी मेंबर भी हैं, सीसी मेंबर भी है और आप इंटरनेशनल स्पीकर हैं और आपने श्रीलंका और क्रोटोना ऐसी जगहों पर भी आपने लेक्चर दिए हैं, आपने विजिट करी है। तो शिंदे जी, आपका स्वागत है। वेलकम शिंदे जी। भारत समाज पूजा प्योरिफिकेशन मंत्रास पार्ट 1 in English. Welcome. Thank you, Archana ji. Very nice of you and for your kind words of introduction. Let me clear you that I am not a Sanskrit Pandit and I have no authority to speak on the mantras actually. But I have been attending the Bharat Samaj Puja since my joining the Theosophical Society last 50 years. And this is the 150th year of the Theosophical Society we are celebrating. At the same time, we are also celebrating the centenary of this Bharat Samaj Puja. This puja is conducted in each and every Theosophical lodges, and usually on every Sunday, whenever meetings are held, that times this puja is performed not only for the purification, but also creating a spiritual atmosphere for our dealings in meetings, etc. So to begin with, we are all aware that the mission of the Theosophical Society
begins with the word to serve humanity. That means working for others or serving for humanity, this quality needs service-mindedness, dutiful mind. And such quality is built only when understand himself. And from esoteric point of view, those who understand themselves are enlightened. Those who understand themselves are enlightened. And those who understand others are intelligent, not yet enlightened. So for enlightenment, what is required? To understand ourselves. So the self-knowledge is very important, and it won't come unless we purify ourselves, not only our bodies and emotions, thoughts, but that purification leads to such kind of knowledge, self-knowledge, and that leads to enlightenment. Aurobindo in Savitri writes, a fire has come and touched men's heart. A fire has come and touched men's heart and gone. A few have caught flame and risen to great life. These are the two sentences in Savitri. I am quoting here because a fire has come and touched men's heart and gone. A few have caught flame and risen to great life, rather greater life. One of them who has caught this fire or flame is, I believe, J. Krishnamurti. We are celebrating 100 years of Bharat Samaj Puja ritual or association. This is done in group of people who believe in the divine light. There is a temple of light within the Adyar campus, very beautifully constructed, and its atmosphere is also uplifting. And this campus itself is the spiritual oasis described by J. Krishnamurti in his letter to Bharat Samaj Puja group in 1924. 27th June 1924, his letter says, Adyar is a spiritual oasis. Adyar is also the international headquarters of the Theosophical Society, spread in 250 acres, where the Adyar River unites with the east coast of Bay of Bengal Ocean. Why I am telling? So these all are the symbolic and also present situations in Adyar surrounding that takes us to the yoga. Union of river with the river, ocean is also a symbolic. So this puja includes certain mantras, and these are selected by J. Krishnamurti, and with the help of Mahadev Shastri, a Sanskrit Pandit who worked in the Adyar library. And the first puja was done by J. Krishnamurti himself in 1925, and its effects in the invisible world was seen by the C.W. Leadbeater, who was a clairvoyant. And J. Krishnamurti was taken care of by Annie Besant and C.W. Leadbeater that we know. He discovered here. So the aim of the puja or ceremonial ritual is very important in this sense, I think,
because it helps for us to purify. Once our former International President Radha Bernier, we don't pray actually, Theosophists, they don't pray. But Radha Bernier once gave me a prayer and it is very uplifting. I used to keep that prayer with me. And that prayer is Saint Francis prayer. And this prayer itself says, Lord, make me an instrument of your peace. Let me sow love where there is hatred. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. Because it is giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. And it is in dying that we are born to eternal life. So such kind of prayers are really inspiring. And I would like to tell you, this Radha Bernier wrote with her handwriting when she visited Pune. I was in the Pune lodge that time. And she gave with her handwriting that chit of this prayer, which indicates that she hinted me such prayers are definitely essential to purify our mental body, purify our emotional body, and thus ready to serve humanity. Now we begin with the powerful mantras in the universe. There are 4 powerful mantras in the universe. Among them, Om is the first mantra. It is a Vedic mantra and also it is the first mantra. It is a fundamental one. And this mantra is mantra of creation. Om, you can chant this. Then second mantra is Gayatri mantra. This is the source of knowledge and energy. And third important mantra is the Mahamrutyunjay mantra. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvar Rukmiva Bandhanan Mrityor Mukshiyam Amrutat. This is mantra of immortality. And fourth one is Vishnu Mahamantra. Om Bhagavate Vasudevaya Namah. See, these are the simple words. Even simple letter Om, that becomes the mantra. Now we'll go to the next. Can you project some slides of invocation? That is, invocation, which is very important. Om Sana Vavatu, Sanau Bhunaktu, Sahaviryam Karvavahai, Tejasvinam Vaditamastu, Ma Vidvishavahai, Om Shanti, Shanti, Shanti. This we used to invoke in every beginning of our study class. May He overshadow us. May we together experience the truth. May we create a channel of divine energy. May we endowed with luminous and true understanding. And may there be no discordance amongst us. Peace, peace, peace. Starting with Om, of course. So this is what I would like to convey in this part 1, especially this is introduction. Then we'll go for the part 1 further. I request, I have sent some. Yeah, sir, just a minute. I'll show. You show that. That will be more, they can understand, no? Because when we think of purification
purification of senses like sight, hearing, smell, taste, and touch. These are the 5 we know. But this list in reality extends to 14 crores senses and many more when we include the body's intelligence and energetic capacities of the human body. Then there are many senses within our body. And most of these are active in childhood, but are silent. They are silent now. They were active in childhood. They are silenced by system that rewarded only logic and discernment. So they are kept silent. We are only given logic and discernment capacity. So when we reach to soul senses, there our energy becomes language of feeling right, language of feeling wrong. We know what is right, what is wrong, what is good, what is bad. That kind of discernment sense is there. That is the soul level sense. But these were available in childhood. And we believe in the feelings of the child. And therefore, in the light and the path, or in our theosophical instructions, we are asked to regain the childhood state. This is the instructions for the aspirants, because he must observe the children and how they are melting down in crowded stores. You can observe them. When we go to the stores, they get melted down. They're refusing hugs of wrong person. They cry loudly for the loud sound. And they say boldly that I don't like that place. Immediately they judge and they say, with no reason. They don't have yet logic, thinking, reasoning, but they have that intuition, that sense of soul. So for all these, purification mantras are solution. And therefore, we have selected in this talk, purification mantra. It is said purification leads to empathy, compassion, magnetoreception, hypervigilance, and even electromagnetic awareness. And most importantly, emotional or soul level currents moving through the body, and they make all our body sensitive. These are not flaws. My mother was telling me to chant Taraka mantra, Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. I was not knowing. In my child state, my mother was telling, when I am frightened, when I am scared, that time she was telling, just say Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Don't know the reason. And I was obeying. But this Hindu tradition mantra, now I have studied, and it is said, this mantra is for liberation and spiritual growth. Sri represents goddess Sita, divine energy. Ra, Sri Ram, Ra signifies fire to burn out kama aspiration, impurities. And Ma represents waters, symbolizing peace and tranquility. And Jaya is victory. So when we say
Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. These are all effects. This is a Taraka mantra. Taraka means that which crosses the ocean of worldly life or worldly samsara. If you see this, if we projects, then we will see how this helps. So with such purification mantra, the affirmation is needed. I clean my energy field or aura with love. You keep this slide, that one. Okay. I protect my aura from all bad forces. I also return all energy that is not mine. I trust my intuition to guide me safely. Thus, I stand in my power, being with oneself, fully protected, spiritually guided, and I stand firm. As a soul of, I stand firm as a soul of love, as a heart of peace, as a mind of stillness, and as a being of light. Deepat Jyoti Namastude. So this is, and this slide it shows Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutangamaya. Brothers and sisters, I am grateful to Taralji to organize such kind of talk, because Taraka mantra are the purification mantras. Purification begins when we have surrender bhav, Ishwara pranidhanani, tapaswadhyaya Ishwara pranidhanani yoga. So when this surrender bhav comes, then all these mantra, they show their effect. But the surrender bhav comes when we know our own state of being. In fact, we all are in this state. I am in unreal world. So I say, lead me from unreal to real. I am in darkness of ignorance. So I invoke, lead me to the light of wisdom. And I am in mortal state. Therefore I invoke, lead me to immortality. Why we say? Because we surrender. Ishwara pranidhanani. I know I am in the unreal world. I am in the darkness of ignorance. I am in the mortal world. And I ask to invoke. If you ask, it will be given. So we all are familiar with mantra invocation. This asatoma sadgamaya means unreal to real, tamasoma jyotirgamaya, darkness to light, and mrityorma amrutangamaya, immortality to mortality, from mortality to immortality, which purifies our body, soul, and spirit. So body, soul, and spirit. Body is personality, Atma. Soul is individuality, Antaratma. And spirit is universality, Paramatma. So it is this individuality on which we meditate. Now we'll go one by one. These mantras, when Bharat Samaj Puja begins with purifying as Sankalpa. These are the Taraka mantras and Viraja mantras. And in the beginning, our puja begins with this mantra, Sankalpa or dedication. And the Adhvairyu says, Hari Om apavitra pavitro va sarvamavastha gatom pyuva yas mareta pundarikaksham sabhaya abhyantaraschuchi. Hari, the Trinity on which we need to meditate, pure or impure in whatever condition I may be living, but he who meditates upon the Lord, of lotus-eyed Lord, is both cleansed
inwardly as well as outwardly. He gets cleansed outwardly as well as inwardly. Sabhaya Abhyantaraschuchi. Next mantra is chanted holding water on our palm, because that water is magnetized and then it is distributed to everyone who is joined the puja. The magnetized water is taken in hand and we chant this mantra, Om Suryasya Ma Manyusya Manupatteyasya Manyukritobhya Papebhyo Rakshantam Yadratraya Papamakarsham Manasa Vacha Hastabhyam Padman Mudrena Shishna Ratris Yatkinchitya Duritam Mai Idamaham Mamrutam Surya Jyotis Mahayo Saha, which means Om the Sun, the thought power, the Lord of the thought power, protect me from the sins committed in thought, whatever sin I may have committed at night in thought or word, by hands or legs, to satisfy hunger or passion. May night remove that. Whatever sin there is in me, this and myself I place as an offering in the source of immortality, in the sun, in the light, Swaha. So to purify ourselves, it is important to know true meaning. Without this true meaning, Samarpit Bhav won't come. See, this is what, when we have a sound sleep at night, and if we are whole day meditating or contemplating in the subconscious mind, then our sleep itself energizes us. Sabhaya Antarshuchi process begins. Then next slide is very important to understand, because puja begins with the invocation of the Lord Hari Om. He is one but manifested as three. You please focus that slide. That is the last slide, and very important to understand clearly. This puja begins with the invocation of the Lord Hari Om. He is one but manifest as three. In man, there is a trinity of spirit, soul, and body. Spirit is spiritual, soul is psychological, and body is physiological. We know this. So our journey is from body to soul to spirit. This is from left to right, body to soul to spirit. Means from worldly consciousness to self-consciousness to God consciousness. And what are these consciousness content? So worldly consciousness is depending on sight, hearing, taste, touch, and smell, all these senses. So sense consciousness is the worldly consciousness. Whereas human being is evolved to self-consciousness, and he is going to evolve into divine consciousness. That is his destiny. But this self-consciousness is the soul consciousness that involves mind, will, and emotion. Therefore, it is more psychological. And spirit consciousness or God consciousness is our spiritual awareness, spiritual sensitivity, spiritual understanding, and spiritual motivation. So we are moving from physiological to psychological and spiritual. So when we are having the mission to serve humanity
by spiritualizing ourselves, by bringing regeneration in the individual, and thus aimed to spiritual self-transformation. It is needed because our physiological consciousness only relates with the environment. But our psychological consciousness, awareness, relates with the others, and our spiritual consciousness relates with the God. That is, we can establish our link with the divinity within. This is how we can step by step, body to soul to spirit, personality to individuality to universality. This kind of journey is there, and for that, whole purification is needed. And these Tarak mantras are selected by J. Krishnamurti, and when you perform the such puja, you ought to purify yourself. Thank you. Part 1, I finish it here. थैंक यू शिंदे जी। बहुत ही आपको सुनना एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, और इतनी गंभीरता से और इतनी फिर भी सरलता से आपने जो समझाया, थैंक यू सो मच। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजेश्वरी जी को। राजेश्वरी जी, यही जो व्याख्यान अभी सिंधे जी ने दिया है वो गुजराती में बताएंगी, भारत समाज पूजा शुद्धिकरण मंत्रों पार्ट 1। पर उससे पहले छोटा सा परिचय उनका। श्रीमती राजेश्वरी देवी जी, आप बीएससी एमएड और हिंदी भाषा में आपने कोविद किया है। आप मुंबई में पली बड़ी हैं। आपको शिक्षण क्षेत्र का 35 वर्ष का लंबा अनुभव है। आप मुंबई की गोकलीबाई स्कूल और राजकोट की कोटक गर्ल्स इंग्लिश स्कूल में बतौर प्रिंसिपल कार्यरत रही हैं। आप बचपन से ही संगीत और साहित्य में रुचि रखती हैं। इसी कारण आपको कई साहित्यकारों को रूबरू मिलने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप कई अवसरों पर अपने साहित्यिक वक्तव्य देने का भी मौका मिला है। आप पिछले 6 सालों से वडोदरा में स्थित हैं और आप रेवा लॉज बड़ौदा से जुड़ी हुई हैं। तो राजेश्वरी जी, आपका स्वागत है गुजराती में भारत समाज पूजा शुद्धिकरण मंत्र पार्ट 1। काइंडली अनम्यूट। हाँ, हेलो, यू आर ऑडिबल, प्लीज से। ओके। બધાને નમસ્કાર। હું રાજેશ્વરી દવે વડોદરા રેવા લોજથી પ્રયત્ન કરું છું કે શિંદેજીનું આટલું બધું જે ગહન અભ્યાસથી કરેલું વક્તવ્ય છે એનું આપણું માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતીમાં હું બને એટલું સરળ બનાવીને કહેવાનો પ્રયત્ન કરું છું। ભારત સમાજ પૂજા વિશે આપણે બધા જ થિયોસોફિસ્ટ જાણતા જ હોઈએ છે, પણ એના શુદ્ધિકરણ મંત્ર વિશે એમણે બધી સરસ રીતે વાત કરી છે કે આ મંત્રો છે એ બધી લોજોમાં ભારત સમાજ પૂજા ટાઈમે થાય છે, અને એમાં સમર્પણની ભાવના છે, માનવતાની ભાવના છે, અને જે કૃષ્ણમૂર્તિજીએ આની ઉજવણી ભારત સમાજ પૂજાના 100 વર્ષ અત્યારે પૂરા થયા છે ત્યાંથી શરૂ કરી હતી। हमने बहुत सरस बधी राधा बर्नियरनी प्रार्थनानी पण वात करी। हवे आपणी इंद्रियो छे एना विषे आपणे बधा ज्ञात छीए, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद अने स्पर्श। परंतु वास्तवमां आ सूची 14 मुख्य इंद्रियो अने घणी बधी इंद्रियो सुधी विस्तरे छे। आमांनी मोटा भागनी इंद्रियो बाळपणमां सक्रिय होय छे, परंतु एवी प्रणालीओ द्वारा शांत करवामां आवे छे जे फक्त तर्क અને સમજદાર ને પુરસ્કાર આપે છે। જ્યારે આપણે આત્માની ઇન્દ્રિયો સુધી પહોંચીએ છીએ જ્યાં ઉર્જા યોગ્ય અનુભવવાની આત્માના સ્તરે ખોટી લાગણીઓ ભાષા બની જાય છે। અને આમાં શિંદેજીએ એક બહુ સરસ બાળકોની વાત કરી છે કે ખરેખર તો આપણું મન પણ બાળક જેવું હોવું જોઈએ અને બાળકની જેમ વર્તન કરવું જોઈએ। બાળક કેવું કરે છે એને આપણે એવું કે બાળકનું આપણે જરા અવલોકન કરીએ, બહુ નાના બાળકનું જેને કાંઈ સમજ નથી, એને જોજો ઘરમાં 2 મહેમાન આવશે તો પણ એ રડવા માંડશે, કારણ કે એને ગમતી પરિસ્થિતિ નથી, એને ભીડભાડના વાતાવરણમાં પણ નથી રહેતા। જે લોકો યુનિક ફેમિલીઝમાં રહે છે, કોઈ બહારથી મહેમાન આવે તો પણ બાળક રડવા માંડે છે।
કોઈ એને અડે તો એને ગમતું નથી, અને હિંમત ભેરે કહી દે છે કે મને અહીંયા નથી ગમતું, અને કોઈ પણ કારણ નથી એની પાસે, પણ ગમતું નથી. તો આ હિંમત જે છે એ શુદ્ધિકરણ મંત્ર આપણને આપે છે. એવું કહેવામાં આવે છે, અને એવો અર્થ પણ છે કે શુદ્ધિકરણ સહાનુભૂતિ, કરુણા, ચુંબકીય સ્વાગત, અતિ સતર્કતા, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક જાગૃતિ, અને સૌથી અગત્યનું શરીરમાંથી પસાર થતા ભાવનાત્મક અથવા આત્માના સ્તરના પ્રવાહો તરફ દોરી જાય છે. આ કોઈ ખામી નથી. હવે એમ કીધું એમણે કે એમની માતાએ એમને એક તારક મંત્ર આપ્યો હતો. માતાનો મંત્ર બહુ સરળ હોય, હંમેશા દરેકની માતા સરળતાથી બાળકને ઘણું બધું શીખડાવે છે. એણે એને એકદમ સરળ મંત્ર આપ્યો હતો, અને એને તારક મંત્ર કીધું કે જ્યારે પણ તને કાંઈ કન્ફ્યુઝન હોય, કાંઈ સમજાતું ન હોય, કે જરા દુઃખી અવસ્થામાં હોય, ત્યારે એવું કહેવાનું, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. આ પરંપરાગત હિન્દુ મંત્ર છે ને, આનાથી કોઈ અજાણ નથી. પણ એમાં કે છે શ્રી એટલે દેવી સીતા, જે ઉર્જાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. રા એટલે કામ અશુદ્ધિઓને બાળી નાખે છે, અને અગ્નિનો અર્થ છે માં, જય જય રામ માં, અને જય છે એનો અર્થ એ છે વિજય. તારકનો અર્થ એ છે જે સાંસારિક જીવનના સમુદ્રને ભૂસી નાખે છે. શિંદેજી એક બહુ સરસ, વધુ બ્રહ્માંડમાં જે શક્તિશાળી મંત્રો છે, આખા યુનિવર્સમાં જે બહુ મંત્રો બધા જે શક્તિશાળી છે એના વિશે વાત કરી. એમણે વાત કરી ઓમ. ઓમ કોને નથી ખબર? એ સૃષ્ટિનો મૂળભૂત મંત્ર છે. બીજો ગાયત્રી મંત્ર, ઓમ ભૂભુર્વ સ્વ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. એ જ્ઞાન અને ઉર્જાનો મંત્ર છે. ત્રીજો એમણે મહામૃત્યુંજય મંત્ર વિશે વાત કરી કે ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ વંદનામ મૃત્યોર્મૂર્તિયમાક્ષાત. અને ચોથો શાંતિ અને સમૃદ્ધિનો મંત્ર, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આ 4 શક્તિશાળી મંત્રોની એમણે વિગતપૂર્વક વાત કરી. એના પછી એમણે એક આહ્વાન મંત્ર વાત કરી, ઓમ સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યમ કરવાવહે તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહે. ઓમ શાંતિ શાંતિ. એનો અર્થ છે કે ઓમ આપણા ઉપર છાયા કરો, ચાલો આપણે સાથે મળીને સત્યનો અનુભવ કરીએ. સહનૌ ભુનક્તુ, આપણે દૈવી ઉર્જાનો એક માર્ગ બનાવીએ. આપણે તેજસ્વી અને સાચી સમજણથી સંપન્ન થઈએ. સાચી સમજણથી સંપન્ન થવાનું છે, ખાલી જ્ઞાનનું નથી, સાથે સાથે સમજણ પણ હોવી જોઈએ. એપ્લિકેશન ઓફ ધ નોલેજ, આપણું જે જ્ઞાન છે એને આપણે વધારતા રહેવું જોઈએ, અને એને બને એટલું સરળ ને સરળ બનાવવું જોઈએ, અને કોઈ વચ્ચે મતભેદ ન રહે, એવો આ પ્રાર્થનાનો વિષય છે, એનો અર્થ છે. પછી એમણે એક બહુ જ સરસ મંત્રની વાત કરી, અસતો માં સદગમય. જે લોકો ગુજરાતી છે અને ગુજરાતી કવિતાની જાણકાર છે એ લોકો આ કવિતાને ખબર હશે. ઊંડા અંધારેથી પરમ સમીપે નાથ લઈ જા. પ્રભુ પરમ. બહુ બહુ જ આના અનુરૂપ છે. અસતો માં સદગમય મૃત્યુ પરમાત્ ગમય. આપણે બધા આનાથી આહવાનથી પરિચિત. આહવાન એટલે એને આવકાર આપવો. અવાસ્તવિકતામાંથી વાસ્તવિક તરફ, અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ, નશ્વરતામાંથી અમરત્વ તરફ દોરી જાય છે. આ આપણા શરીર, આત્મા અને આત્માને શુદ્ધ કરે છે. ભારત સમાજ પૂજા સંકલ્પ તરીકે પવિત્રતા સાથે શરૂ થાય છે. હવે એમનો મંત્ર કીધો છે, મને ઓછો સમય છે એટલે આપણે મંત્રનું નહીં બોલીએ, એનું ટ્રાન્સલેશન જે છે એ ગુજરાતીમાં છે એવું કહીશ. આપણે ચુંબકીય પાણી, અભિપ્રેરિત જે પ્રાણી છે એને લઈને આપણે આ મંત્ર બોલીએ છીએ. ઓમ પ્રાણાનાય સ્વાહા. પછી કે છે એનો અર્થ હું કહીશ. હું શુદ્ધ અશુદ્ધિઓથી મુક્ત, તેજસ્વી અને અવાજ, સ્પર્શ, સ્વરૂપ, સ્વાદ અને ગંધમાં પાપ રહિત બનું. કેટલી બધી જગ્યાએ આપણે પાપો કરતા હોઈએ છીએ, એ બધામાંથી મુક્ત બનું એવું હાથમાં પાણી લઈને આપણે ભારત સમાજ પૂજા વખતે કહીએ છીએ સ્વાહા. ઓમ મારામાં 5 ગુણો, શબ્દ, સ્પર્શ, રંગ, સ્વાદ અને ગંધ, શુદ્ધ થાવ. આ બધું જ મારું શુદ્ધ રહે. પ્રકાશ હું છું, હું કલંકથી મુક્ત થાવ, પાપોથી મુક્ત થાવ, સ્વાહા. પછી કહે છે શુદ્ધિ એ 5 ગુણોમાંથી એક છે.
એટલે કાનને અવાજ પ્રત્યે સંવેદનશીલ બનાવવા દો. સરખું સાંભળો. નાઇવ લિસનિંગ ઇંગ્લિશમાં જેને કહેવાય છે કે શાંતિથી વાતને સાંભળવી જરૂરી છે. કોઈને સાંભળવું નથી હોતું, બોલવું જ હોય છે. પણ એકચ્યુઅલી જે આ ભારત સમાજ પૂજા કહે છે કે સાંભળો, સંવેદન અનુભવો, ત્વચાને સ્પર્શ પ્રત્યે સંવેદનશીલ બનવા દો. નાના બાળકની જેમ આંખને રંગ પ્રત્યે સંવેદનશીલ બનાવો. ફૂલ જોઈને પણ જો આપણને આનંદ ન થાય રંગબેરંગી ફૂલો જોઈને તો એ શું કામનું. નાકને ગંધ પ્રત્યે સંવેદન બનવા દો. સ્વાહા. જ્યારે આપણા ક્રિયાના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે 3 જગતમાં સક્રિય હોઈએ છીએ: વિચાર દ્વારા, માનસિક ઈચ્છા દ્વારા, ભાવનાત્મકતા અને ક્રિયા દ્વારા શારીરિક રીતે આપણે સક્રિય હોઈએ છીએ. એમણે પછી જે વાત કરી, હજી એક મંત્ર છે એમાં, મારામાં 5 શ્વાસો પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન શુદ્ધ પ્રકાશ બની રહે. હું કલંકથી મુક્ત થાવ, કોઈ પણ કલંક મને લાગે નહીં, પાપોથી મુક્ત થાવ. સ્વાહા. સ્વયંને શુદ્ધ કરવા માટે સનો સાચો અર્થ જાણવો એ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે. એમણે જે રહ્યા છો રાજેશ્વરીજી, હાજી पार्ट 2 में जता रहा था मैं। ना आप बोलिया साहब, ये पार्ट 2 में है। ये पार्ट तो 2 में आपने बोला ना, लेकिन ये नहीं बोला। ओके, ट्रिनिटी बोला ना। यूनिटी पे एंड है। हाँ आप तो आप आप स्वाहा वाले आप तारक मंत्र जो नीचे है ना पूरे स्वाहा वाले वो पढ़ रही है। हाँ वो पढ़ लिया, उसके बाद ट्रिनिटी क्यों बोली में आ रही हूँ। नहीं नहीं, वो ट्रिनिटी पहले है और वो मंत्र सेकंड पार्ट में है। कोई बात नहीं, अभी आप ट्रिनिटी ले लीजिए। अच्छा, ये ट्रिनिटी है. ट्रिनिटी में शरीर પછી આત્મા પછી સોલ અને પછી આત્મા એવી રીતે જવાનું છે. બરાબર છે? ઠીક છે. विश्व चेतना, स्व चेतना और ईश्वरीय चेतना अभी बराबर है? हाँ बिल्कुल, आप स्लाइड देखिए ना, साइड में स्लाइड भी आ रही है। हाँ हाँ हाँ. ट्रिनिटी विश्व चेतना है. इसमें एमें विशिष्ट संवेदनशीलता, विशिष्ट समस्या અને વિશિષ્ટ પ્રેરણા, આધ્યાત્મિક, પછી માનસિક છે અને પછી શારીરિક છે. સ્વચેતના, આત્મસ્વભાનતા, મન, ઈચ્છા, લાગણી અને છેલ્લે છે વૈશ્વિક ચેતના, દ્રષ્ટિ, શ્રવણ, સ્વાદ, સ્પર્શ અને ગંધ. આ ટ્રિનિટીનું નું છે. ओवर अर्चना जी। આ મારું અહીંયા આગળ પૂરું થયું. હવે બીજો ભાગ પછી આપણે મળીશું. થેન્ક યુ. अभी एक छोटी सी वो है कि जहाँ पर अवानीश जी हैं वहाँ पर कांटेक्ट नहीं हो रहा है उनसे, वो जूम नहीं लगा पा रहे हैं। तो लास्ट मिनट पे अर्चना जी कोशिश कर रही है कि वो हिंदी की स्क्रिप्ट जो उन्होंने भेजी है वो पढ़ें। ऑल द बेस्ट अर्चना जी, एंड आई नो दैट इट विल बी वंडरफुल। थैंक यू। जी थैंक यू तरल जी, धन्यवाद तरल जी। और जो सिंधी साहब ने समझाया अभी वो मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी। हम आज बात कर रहे हैं भारत समाज पूजा शुद्धिकरण मंत्र के बारे में। सिंधी जी ने बहुत ही बारीकी से उसको समझाया और कहा है हमको। तो हेलो, जब हम इंद्रियों की शुद्धि के बारे में सोचते हैं तो दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श शामिल होते हैं, लेकिन वास्तव में यह सूची 14 मूल इंद्रियों तक विस्तृत हो जाती है। और जब हम शरीर की वृद्धि या ऊर्जा क्षमताओं को इसमें शामिल करते हैं तो यह संख्या और भी बढ़ जाती है। इनमें से अधिकांश बचपन में सक्रिय होती हैं, लेकिन उन प्रणालियों द्वारा शांत कर दी जाती है जो केवल तर्क और विवेक को ही पुरस्कृत करती है। जब हम आत्मिक इंद्रियों तक पहुंचते हैं जहां ऊर्जा आत्मा के स्तर पर सही और गलत महसूस करने की भाषा बन जाती है। यहाँ उन्होंने बच्चों के बारे में बताया कि बच्चों की अवस्था पुनः प्राप्त करना साधकों के लिए दिया गया निर्देश है, क्योंकि बच्चों पर ध्यान दें
और देखें कि कैसे वे भीड़ भाड़ वाले तनाव में पिघल जाते हैं, गलत व्यक्ति के गले लगने से इनकार कर देते हैं, तेज आवाजों से रोने लगते हैं और बिना किसी कारण के बेधड़क कह देते हैं कि ये मुझे जगह पसंद नहीं है। इसीलिए इनके लिए शुद्धि मंत्र ही समाधान है। ऐसा कहा जाता है कि शुद्धि से सहानुभूति, करुणा, चुंबकीय जागरूकता और सबसे महत्वपूर्ण शरीर में प्रवाहित होने वाली भावनात्मक या आत्मिक धाराओं का विकास होता है। ये दोष नहीं है। शिंदे जी ने कहा कि उनकी माँ ने उनको एक तारक मंत्र दिया था, श्री राम जय जय राम। इसका जाप करने को कहा था। यह हिंदू पारंपरिक मंत्र मुक्ति और आध्यात्मिक विकास के लिए है। यहाँ श्री यानी देवी सीता दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। रा काम की अशुद्धियों को जलाने वाली अग्नि का प्रतीक है। माँ जल का प्रतिनिधित्व करती हैं और शांति और स्थिरता का प्रतीक है। जय जय यानी विजय। तारक का अर्थ यह है कि वो सांसारिक जीवन यानी संसार के सागर को मिटा देता है। उन्होंने फिर बताया, भारत में कुछ सबसे शक्तिशाली मंत्रों में मूल मंत्र ओम, जो सृजन का मंत्र है। दूसरा गायत्री मंत्र, जो ज्ञान और ऊर्जा के लिए है। तीसरा महामृत्युंजय मंत्र, जो सुरक्षा और अमरता के लिए है। और विष्णु महामंत्र, जो शांति और समृद्धि के लिए है। चार सबसे शाली मंत्र का अभी हम यह विवरण करेंगे। ओम, इसका यह है कि ब्रह्मांड का ये मूल मंत्र है और इसे सृजन का प्रतीक माना जाता है। यह सभी मंत्रों का आधार है और इससे ब्रह्मांड के सभी ध्वनियों के मूल का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्र माना जाता है। दूसरा गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका विवरण ये है कि ज्ञान और ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है। यह बुद्धि को प्रेरित करने और सही रास्ते पर ले जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। यह मंत्र अमरता और सुरक्षा से संबंधित है। यह मृत्यु और उसके अमृत के मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। चौथा विष्णु महामंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह शांति और समृद्धि का मंत्र है। आगे बढ़ते हैं। इन्वोकेशन, आह्वान, प्रार्थना। उन्होंने कहा, ओम सहनाववतु सनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? ओम, वह हम पर छाया करे, हम मिलकर सत्य का अनुभव करें, हम दिव्य ऊर्जा का एक चैनल बनाएं, हम दीप्तिमान और सच्ची समझ से संपन्न हो, हमारे बीच कोई मतभेद न हो। ओम शांति शांति शांति। ऐसे शुद्धि मंत्रों के साथ पुष्टि की आवश्यकता होती है। मैं अपने ऊर्जा क्षेत्र या आभा को साफ करता हूँ। मैं अपनी आभा को सभी बुरी शक्तियों से बचाता हूँ। मैं सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन के लिए अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करता हूँ। स्वयं के साथ पूरी तरह से संरक्षित रहना, आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित, प्रेम की आत्मा के रूप में, शांति के हृदय के रूप में, स्थिरता के मन के रूप में और प्रकाश के अस्तित्व के रूप में। दीप ज्योति नमोस्तुते। फिर आता है एक मंत्र, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय। हम सभी इस आह्वान से परिचित हैं। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यह हमारे शरीर, आत्मा और भावना को शुद्ध करता है।
विरजा या तारक मंत्र इस पूजा में शामिल हैं। भारत समाज पूजा संकल्प के रूप में पवित्रता से शुरू होती है। समर्पण, यह मंत्र है हरिओम। हरि, जिन्हें त्रिमूर्ति के रूप में ध्यान करना चाहिए, शुद्ध हो या अशुद्ध, किसी भी स्थिति में रहते हुए जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर दोनों से शुद्ध हो जाता है। अब अपवित्र पवित्रो वा वाला ये मंत्र है। फिर हम हाथ में चुंबकीय जल लेकर यह मंत्र कहते हैं। ओम प्राणापाद वाला मंत्र है। माफ करिएगा, मुझे उसका सही उच्चारण नहीं आता, इसलिए मैं सिर्फ उसका रेफरेंस दे रही हूँ। ओम, मेरे भीतर के 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान और समान, शुद्ध हो जाएं। मैं प्रकाश हूं, मैं दाग धब्बों से मुक्त हो जाऊं, पापों से मुक्त हो जाऊं। स्वाहा। स्वयं को शुद्ध करने के लिए समर्पित भव, सही अर्थ जानना सब। अब आते हैं हम अगले। आई थिंक आप भी पार्ट नहीं, अभी वो ये आया स्पिरिट वाला। एक मिनट है, ये आपको स्लाइड। सर्वे ओम सूर्य मनुष्य वाला लेना है, पेज 6 साइड नंबर। नहीं, जो एक मिनट है सर, ये ऊपर 4 नंबर आ रहा है अभी। मनुष्य की त्रैता, मैनस ट्रिनिटी, बराबर है सर, सिंधे सर? ट्रिनिटी वाला ले। जी। मनुष्य की त्रैता की अवधारणा को समझाती है, जिसमें मनुष्य को 3 भागों आत्मा, प्राण और शरीर में का संयोजन बताया गया है। यह आरेख इन तत्वों के बीच संबंध और चेतना के 3 स्तरों का वर्णन करता है। यहाँ मुख्य अवधारणाएं हैं आत्मा, प्राण और शरीर। ये छवि बताती है कि भगवान एक है, लेकिन मनुष्य में त्रैता के रूप में प्रकट होते हैं। हमारा अस्तित्व विश्व चेतना से आत्म चेतना और फिर ईश्वर चेतना की तरफ की यात्रा है। चेतना के स्तर जो बताए हैं, विश्व चेतना यानी वर्ल्ड कॉन्शियसनेस, ये शारीरिक यानी फिजियोलॉजिकल स्तर में सह संबंधित है। और इससे हमारी पांचों इंद्रियां, हमारी पांचों इंद्रियां शामिल हैं। देखना, सुनना, स्वाद लेना, छूना और सूंघना। यह पर्यावरण से संबंध स्थापित करती है। आत्मचेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस या मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल स्तर से संबंधित है, जिसमें मन, इच्छा और भावनाएं शामिल हैं। ये दूसरों के संबंध स्थापित करता है। फिर आती है ईश्वर चेतना, गॉड कॉन्शियसनेस। यह आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल स्तर से संबंधित है और इसमें आध्यात्मिक जागरूकता, संवेदनशीलता, समझ और प्रेरणा शामिल है। यह ईश्वर से संबंध स्थापित करता है। कार्य की जो अवस्था है, जब हम कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हम तीनों दुनिया में सक्रिय होते हैं। मानसिक में विचार के रूप में, भावनात्मक में इच्छा के रूप में और शारीरिक में क्रिया के रूप में। यह मॉडल दर्शाता है कि मनुष्य एक जटिल प्राणी है, जिसका जीवन इन विभिन्न स्तरों की चेतना और कार्य के माध्यम से प्रकट होता है। हिंदू दर्शन में आत्मा यानी आत्मन को सार्वभौमिक और शाश्वत माना जाता है, जबकि शरीर नाशवंत है। तो यहाँ पार्ट 1 समाप्त होता है। शिंदे जी। Thank you, thank you. Both of you very nicely dealt. Only little confusion was there. The second part came in the middle. But this Trinity is very important to understand because the very puja begins with the invocation of the Lord, saying Hari Om. So puja begins with the Hari Om. Why? Because Lord is one, God is one, but He manifests. His manifestation is in Trinity, and that needs to be understood. And therefore, we have to purify our body and our soul so that it can connect its connection with the divinity. So now, in the second part, we consider these mantras. ओम प्राणापान व्यानो उदान समाना में शुद्धंताम ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूयासम स्वाहा.
It is together we are chanting. May the 5 breaths like prana, apana, vyana, udana, and samana in me be purified because I am light, and be free from all kinds of taint, free from sins, and finally we say swaha. So the second, this is very important. 5 breaths. We'll consider with that chart. You project that chart here. Next projection. These pranapana, vyanodana, samana me shuddhantam jyotiraham, virja vipapma bhuya samswaha. See how this prana is not the breathing. It is something very subtler which flows through our nadis. So the pranavayu is a life-giving energy, vitality, but controls respiration, feelings, and thought process. Then apanavayu is in charge of the excretory system and it is downward. Whereas udanavayu maintains buoyancy of the body and it is upward direction. Speech, memory is concerned with this. Then Vyanavayu diffuses through body, aura, and necessary for the preservation of the body. And Samanavayu, it is a balancing Vayu, generates heat in the system and brings integration. So all these Vayus, Pranavayu, Apanavayu, Udanavayu, Vyanavayu, Samanavayu, where they are distributed in the other, both the slides, they show how they are distributed throughout the life. And in this sense, when we chant Pranapana, Vyano Udana, Samana Me Shuddhantam, all these Vayus, let them get purified. Because I am beyond this. I am Jyotiraham, Virja Vipapma, Bhuya Samswaha. This is how we chant. And next is, mantra is, Prithvi Aap Tej Vayu Akasha Me Shuddhan Jyotiraham, Virja Vipapma, Bhuya Samswaha. Here again, elemental purification, elemental harmony is very important because about 60% of our body is with water and it is built through essential elements. Therefore, elemental harmony is essential. This is the step of purification. We are not apart from the nature, but we are part of the nature. You know, iron, it comes from ancient stars. Whatever iron we have, element in our body, it comes from the ancient stars. Calcium that we have, it comes from the ocean or seas. And carbon that comes from the air itself. So we are connected with all this. And around 38 trillion cells in our body work together to keep this star dust alive. So you are not separate from the nature. You are its memory, which is walking. You are earth. Someone once said, water has no effect on fake flowers. And it hit me hard. Even Radha Barnier never said to use the plastic flowers. Because even natural flowers, they radiate something. But the plastic flowers, they don't radiate anything. So someone once said, water has no effect on fake flowers. In fact, human beings are
are the perfected flowers of humanity. So humanity is flowers. We are all humanity's flowers. We are not plastic flowers. We are all humanity's flowers. And why we must be a fake flower? So let us perform puja wholeheartedly. Then next slide you project. When we say Prithvi Aap Tej Vayu Akasha Me Shuddhantam Jyotiraham Virja Vipapma Bhuya Samswaha. This next slide, next, this one. This one, you look at it. Air, fire, water, and earth. So when we say Prithvi Aap Tej Vayu Akasha Me Shuddhantam Jyotiraham Virja Vipapma Bhuya Samswaha. This elemental harmonization is brought about for inner integrity. We have got earth, water, air, fire. But fifth one is invisible, that is ether. It carries light, memory, and sound. It is not a matter, but it is a vibration. It always gives us a call to tune. Rather, these air, fire, water, earth are produced by the ether. So that invisible element is also there. So when we chant this mantra, Prathvyap Tej Vayu Akasha Me Shuddhantam Jyotiraham Virja Vipapma Bhuya Swam Swaha. That time, when you say air, remember that you are air. When you remember that you are air, then observe, breathe, focus, and decide. When you are saying fire, then remember that you are fire, burn, tame, adapt, and ignite. What is to be burnt? Negativity is to be burnt. What is to be tamed? Anger, lust, greed must be tamed. And we must adapt to the changing challenges and ignite ourselves. That is what the fire does. Then when we say water, remember you are water. Then cry. Sometimes crying cleanses you. And this water always flows. So it helps to let go many things. And you think of this, crying, cleansing, flowing, letting go. And then when you say Prithvi, earth, this you remember when you are saying earth, then you are the earth element. With that, you must ground, you must learn to give, you must learn to build, and also you must learn to heal. So important is this earth element. And when we remember the ether, spirit, that remember that you are that spirit, then connect, listen, and know. I would like to say here what I heard in Triveni lecture last time. It was mentioned Lahari Mahashaya's esoteric philosophy. And Lahari Mahashaya's esoteric philosophy gave the esoteric meaning in Mahabharata. And he applied to the parties or those personalities. Arjuna connects with fire. Bhima connects with air. Yudhishthira connects with ether. Nakula connects with water. Sahadeva connects with earth. And Draupadi is the Kundalini energy. And even Ganga is the spiritual river. And Bhishma
is the universal ego, and Vichitra Virya is the divine Vigo. So Lahari Mahasaya, in his esoteric meaning of Mahabharata, he connects these with these acts or play. So when we say Prithvi Aap Tej Vayu Akasha Me Shuddhantam Jyotiraham Virja Vipapma Bhuya Samswaha, that time we are remembering not only we are air, fire, water, earth, but also our Mahabharata, the parties which are very strong, they are also connected with this. And like attracts like. If you remember them, they give their strength to you. This is how it helps to purify. And the last slide you can project now. This elemental harmonization. So it is shown earth, grounding, stability, soil and vitality. Water, emotional flow, memory and purification. Air, breath, communication and higher mind. And fire, transformation, solar flame and willpower. And spirit. So in the center we can see this spirit. So in this, earth grounds, water flows, fire transforms, air cleanses, and I stand as spirit, harmonizing all into incoherence. As I said, ether, from ether, these earth, water, fire, and air are produced. So it is this ether which is in our Kanta Chakra, Akasha, and we say Hanumantaya Namaha when we chant that one. So it is this which brings harmonization of the elementals in our body, and this is very important for the purification that brings harmonization. Then the last mantra of this part is the Shabda Sparsha Rupa Rasagandha Me Shuddhantam Jyotiraham Virja Vipapma Bhuya Samswaha. So Shabda Sparsha Rupa Rasagandha Me Shuddhantam Jyotiraham Virja Vipapma Bhuya Samswaha. I have taken a different projection for this. One more projection. Do you have that one? That with this one. I have shown this because here we all sense organs, 5 sense organs, tongue, eyes, ears, skin, all these are there. So purification, when we chant this Shabda Sparsha Rupa Rasagandha Me Shuddhantam, then we must become sensitive. It projects towards the sensitiveness. Let our ear become sensitive to sound. Let your skin becomes sensitive to skin. Let your eye becomes sensitive to all colors. And let your tongue become sensitive to smell. And let your nose become sensitive to smell. So all these 5 qualities are found in the children. They are very sensitive. And I have projected this, a child face, but very powerful face I have projected in these projections. So Shabda Sparsha Rupagan Rasagandha Me Shuddhantam Jyotiraham Virja Vipapma Bhuya Samswaha. So here I end, but in concluding I can tell Vasudeva Kutumbakam, universal brotherhood or human family, because brotherhood is the foundation of the universal morality. We purify ourselves to develop morally and spiritually. Freedom of thought and brotherhood are the 2 pillars of the Theosophical society. And human family is like a Akash Tattva, ether, source of all other elements. The friends as air element, they are both mirror and shadow. Mirror don't lie and shadows never live. So, metta bhava, that is friends, that is air.
Kindness is fire element that burns all negatives. Honesty, that is water element, changes itself when necessary. It takes the shape of the surrounding. Humility is the earth element, gives stability. So human life has these 5 pillars: family, friends, kindness, honesty, and humility. Even in Mahabharata, as I said, 5 Pandavas symbolize the same principle, who are living for one another peacefully. Peace does not arrive from outside. It blooms when you become introvert. So this is the discipline is the key. And with this discipline, we get the purified. By prayers and rituals, they purify you. But you discipline yourself, then the order comes in you. And when there is order, when there is purification, you won't sit quiet. You trust to go to help others. And that purifies you completely. And that unites you. Yoga is at you. So this is what I want to convey in these 2 parts. Thank you very much for giving me this opportunity. मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजेश्वरी बहन को कंक्लूडिंग पार्ट 1 का शुद्धिकरण मंत्र का पहले भाग का दूसरा भाग आप गुजराती में प्रस्तुत करें. ફરીથી બધાને આમંત્રણ આપું છું. આપણા ગુજરાતી જે સિંધે સાહેબે આટલી સરસ સમજ આપી એને હવે હું ગુજરાતીમાં કોશિશ કરું છું કરવાની. એમાં એમણે સૌથી પહેલા તો એક સ્લાઇડ બતાવી જેમાં તરલભાઈ સ્લાઇડ બતાવશો તો વધારે સમજાશે. પહેલી આ સ્લાઇડ ઓમ પ્રાણાવાલી મંત્રવાળી. એ જ ગાવા દો કારણ કે શ્લોક બોલવા જઈશ ને તો સમયમાં મારું પૂરું નહીં થાય. એટલે એ જે ઓલું છે ને પિક્ચર ઉદાન, હા બસ યસ યસ યસ. એમાં પહેલા છે પ્રાણ, એનો જીવનમાં આવતી જે ઉર્જા છે, જીવન શક્તિ છે, શ્વસન, પરિભ્રમણ, સંવેદનાત્મક ગતિ, તાપમાન, લાગણી, વિચારસરણી, એ આ છાતીમાં છે આપણે એ પ્રાણવાયુ છે. એના પછી એમણે કહ્યું અપાનવાયુ, એ પેલ્વિસ થી પગ સુધી નીચેની ગતિથી ઉર્જા એમાં જાય છે અને વીર્યસ્ખલન, માસિક સ્રાવ, મૂલાધારમાં કંદર્પ એના વિશેનું એ સંભાળે છે. આ બધું ડિપાર્ટમેન્ટ છે આપણા શરીરમાં. 3 છે. ત્રીજું છે ઉદાન, જે ગળાથી માથા સુધી ઉપર તરફ ગતિશીલ ઉર્જા છે. વાણી, સ્મરણ શક્તિ, ગ્રહણ શક્તિ, ઈચ્છા શક્તિ, પ્રયાસ, માનસિક શક્તિ, સંતુલન, સંવેદના અને બુદ્ધિ આ સંભાળે છે. ચોથું છે વ્યાન, જે આખું શરીર, આપણી જે ઓરા છે, દરેક વ્યક્તિની અલગ અલગ ઓરા હોય છે, એ સંભાળે છે. આખું શરીરમાં તે ફેલાયેલી છે. ઉર્જા, હલનચલન, ધબકાર, પરિભ્રમણ, સાંધા, સ્નાયુઓ. અને 5મું છે એ સમાન વાયુ, જે પેટ, અન્ય વાયુઓ, સંતુલન, પાચન, વિતરણ, પોષણ અને એકીકરણ સંભાળે છે. એમાં ઓમ મારામાં રહેલા 5 તત્વો પૃથ્વી, પાણી, પ્રકાશ, વાયુ, આકાશ શુદ્ધ થાઓ. હું પ્રકાશ છું. હું કલંકથી મુક્ત થાઓ. પાપોથી મુક્ત થાઓ. સ્વાહા. આંતરિક અખંડતા માટે તત્વ સુમેળ લાવવામાં આવે છે. આપણામાં લગભગ 60% પાણી છે અને બાકીનું 21 આવશ્યક તત્વોથી બનેલું છે. તેથી તત્વ સુમેળ શુદ્ધિકરણનું એક આવશ્યક પગલું છે. આપણે પ્રકૃતિથી અલગ નથી, પણ તેનો એક ભાગ છે. પ્રાચીન તારાઓમાંથી લોખંડ, સમુદ્રમાં કેલ્શિયમ, હવામાં કાર્બન, લગભગ 38 ટ્રિલિયન કોષો તારાની ધૂળને જીવંત રાખવા માટે સાથે મળીને કામ કરે છે. આપણે યુનિવર્સથી અલગ નથી, આપણે કુદરતથી પણ અલગ નથી.
આપણે તો તેની ચાલતી સ્મૃતિ છીએ, યાદ છીએ એની. આપણે પૃથ્વી છીએ, તમે પૃથ્વી છો. કોઈએ એકવાર કહ્યું હતું કે પાણીની નકલી ફૂલો પર કોઈ અસર થતી નથી. આપણે પાણીમાં નાખીને ધોઈ નાખીએ તો પાછા એવા ને એવા. એ કરમાતા પણ નથી, પણ એનામાં સુગંધ નથી, એનામાં કલર છે એ નેચરલ કલર નથી, અને એને જોઈને આપણને એટલી કોઈ આમ ખુશ થઈએ જે ફૂલને જોઈને, એવી રીતે નથી થતું. અને હકીકતમાં મનુષ્ય પણ એક ફૂલ છે, એ માનવતાનું ફૂલ છે. અને નકલી ફૂલો કેમ બનવાના તેના બદલે તો આપણે સંપૂર્ણ ફૂલ બનીએ, આપણી સાથે આપણે માનવતાને રાખીએ, દયા રાખીએ, કરુણા રાખીએ, જે થિયોસોફિકના મૂળ તત્વો છે એને આપણે કરી અને આપણે સારા માનવ બનીએ, એક મનુષ્ય ફૂલ બનીએ. પછી એમણે એક સ્લાઇડ છે 4, હવા, આગ, પાણી અને પૃથ્વી. આપણી પાસે પૃથ્વી, પાણી, વાયુ અને અગ્નિ છે, પણ પાંચમું અદ્રશ્ય છે. પાંચમું આમાં નથી દેખાતું. તમે સ્લાઇડ જોશો તો 4 ચિત્રો છે, પાંચમું નથી, એ છે ઇથર. સોરી, એ વસ્તુ નથી, વાઇબ્રેશન છે. તે પ્રકાશ, સ્મૃતિ અને ધ્વનિ ધરાવે છે. તે કોઈ દ્રવ્ય નથી, પણ એક કંપન છે. આપણે મોબાઈલ સાઉન્ડલેસ રાખીએ જ્યારે, ત્યારે કંપન આવે, એ આ ઇથર છે. અને હંમેશા આપણને સુમેળ સાધવા માટેનું આહવાન આપે છે. યાદ રાખવાનો અભ્યાસ કરો કે એમણે ચારેય લીધું છે. આપણે જોઈએ કે આપણે એવું માનીએ કે આપણે વાયુ છીએ, અને અવલોકન કરીએ તો શ્વાસ લેવાનું, ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું અને નિર્ણય લેવાનો. સપોઝ આપણે એમ વિચારીએ કે આપણે અગ્નિ છીએ, કારણ કે આપણે 5 તો આપણે છીએ જ, તો નકામી વસ્તુને, નેગેટિવિટીને બાળી નાખીએ, વસ્તુને કાબુમાં રાખો અને અનુકૂલન, બધા સાથે અનુકૂલનતાથી રહેવાનું અને પ્રજ્વલિત કરવું, પ્રકાશ આપવું. હવે આપણે સપોઝ પાણી છીએ, એમ માનીએ છીએ જ આપણે, પણ અત્યારે આપણે ધારવાનું છે કે પાણી છીએ. તો રડો, ઘણા કે રડવું નહીં, પણ જ્યારે રડવું આવે, ખૂબ દુઃખ થાય ત્યારે રડી લેવું જોઈએ. તમે રડો, શુદ્ધ કરો. પાણી શું કરે છે? બધાને શુદ્ધ કરે છે. શુદ્ધ કરો, પ્રવાહિત રહ્યો, એકની એક જડતાને ન પકડી રાખો. દરેક વસ્તુ સાથે કે પાણી જેવો, વાટકા મારે તો વાટકા જેવો, ગ્લાસ મારે તો ગ્લાસ જેવો. પ્રવાહ કરો અને જવા દો, વસ્તુને જવા દો, કોઈ વસ્તુને પકડી ન રાખવાનું, પ્રવાહિતા રાખો હંમેશા. તમે પૃથ્વી અને ભૂમિ છો. એમાં શું કરવાનું છે? ભૂમિ, પૃથ્વી આપણને શું કરે છે? હંમેશા આપે જ છે, બનાવે છે, વસ્તુને બનાવે છે. તો તમે પણ આપો, શક્ય હોય એટલું આપો અને બનાવો અને સાજા કરો. ધરતીકંપ ને બધું આવે છે, પછી પાછી ધરતી સરગસ થઈ જાય છે, એ એની પોતાની કળા છે. તો એવી કળા પોતે પણ પોતાને સાજા કરી શકીએ છીએ આપણે. સેલ્ફ હીલિંગ. યાદ રાખો કે તમે ઇથર છો, જે સાંભળવા અને જાણવા માટે જોડાય છે. શ્રી લહેરી મશાઈને ટાંકીને શિંદેજીએ મહાભારતના પાત્રોનો ગૂઢ અર્થ આપ્યો. એમણે કહ્યું કે અર્જુન છે એ અગ્નિ છે, આ રીતે આપણે ક્યારેય નહીં જોયું હોય. ભીમ છે વાયુ છે, યુધિષ્ઠિર છે ઈશ્વર છે, નકુળ તે પાણી છે, સહદેવ પૃથ્વી છે, દ્રૌપદી કુંડલીની શક્તિ છે, દુર્યોધન અહંકાર છે, અને કૌરવ છે એ સંવેદના છે. તેમણે ગંગા નદીને પણ યાદ કર્યા, જે આપણી અતિ પવિત્ર અને આધ્યાત્મિક નદી છે. હવે એલિમેન્ટ્સ હાર્મોનાઇઝેશનની સ્લાઇડ હશે. એમાં અર્થ એટલે કે પૃથ્વી, વોટર એટલે કે પાણી, ફાયર એટલે કે અગ્નિ, અને એર એટલે કે પવનને આપેલું છે. અને એમાં કહ્યું છે કે અર્થ ગ્રાઉન્ડ્સ, અર્થ જમીન છે, આપણે જોઈએ છીએ, પકડી રાખે છે. પાણી વહે છે. ફાયર એકદમ બધાને પ્રજ્વલિત કરે છે. એર છે એ સ્વચ્છ કરે છે, હવા છે એ સ્વચ્છ કરે છે. અને હું પોતે શું છું? આત્મા છું, બધા સાથે હાર્મોનાઇઝ, અનુકૂળતા સાધું છું અને એકદમ બધાની સાથે હળી મળીને રહું છું. એના પછીની સ્લાઇડ એમણે એક નાના બાળકની આપી છે. અને એમણે બાળકને ખૂબ જ મહત્વ આપ્યું છે કે બાળકની જેમ કરવા માટે શું? કે હું
એક શ્લોક છે એમાં, ઓમ હું શુદ્ધ અશુદ્ધિઓથી મુક્ત, તેજસ્વી અને સમાજ, અવાજ, સ્પર્શ, સ્વરૂપ, સ્વાદ અને ગંધમાં પણ પાપ રહિત બનું. સ્વાહા. ઓમ મારામાં ગુણો, 5 ગુણો, શબ્દ, સ્પર્શ, રંગ, સ્વાદ અને ગંધ શુદ્ધ થાઓ. પ્રકાશ હું છું અને કલંકથી મુક્ત થાવ, પાપોથી મુક્ત થાવ. સ્વાહા. શુદ્ધિ એ 5 ગુણોમાંથી એક છે. એટલે કાનને અવાજ પ્રત્યે સંવેદનશીલ બનવા દો. ખૂબ જ ઘોંઘાટ નહીં, પણ સુરીલા અવાજને સાંભળવાની ટેવ પાડો અને અવાજ પ્રત્યેને સંવેદનશીલ બનાવો. ત્વચા પ્રત્યે સંવેદનશીલ બનવા, આપણી ત્વચા છે એને પણ સંવેદનશીલ બનાવો. આંખને રંગ પ્રત્યે સંવેદનશીલ બનવા દો. આપણી આંખ છે એને સરસ રંગબેરંગી ફૂલો, સારા દ્રશ્યો જોવાની ટેવ પાડો અને એવી રીતે એને સંવેદનશીલ બનાવો. નાકને ગંધ પ્રત્યે સંવેદનશીલ બનવા દો. જ્યારે આપણે ક્રિયાના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે 3 જગતમાં સક્રિય હોઈએ છીએ: વિચાર દ્વારા, માનસિક ઈચ્છા દ્વારા, ભાવનાત્મક અને ક્રિયા દ્વારા શારીરિક. થિયોસોફિકલ સોસાયટી છે તે વસુધૈવ કુટુંબકમમાં માને છે. આપણે સૌ એનાથી પરિચિત છીએ. આપણે અહીંયા પણ હું એક કવિતાનું એક વાક્ય કહીશ. અંતર્મમ વિકસિત કરો, મને પોતાને પ્રજ્વલિત કરો, એવું છે. અને બીજું એમણે કહ્યું, દર્પણ જૂઠ ન બોલે, કે દર્પણ છે એ આપણને જેવા હોય એવા જ દેખાડે છે. બીજા બધા ભલે કે તમે સારા લાગો છો કે, પણ દર્પણમાં જે આપણે પોતાને જોઈએ છીએ, આપણું સ્વનિરીક્ષણ એ જોવાનું બહુ જરૂરી છે. શાંતિ, અંતરની શાંતિ. શાંતિ અને એકદમ એકાંત અને એકલતામાં જેમ ફરક છે, એમ શાંતિ અને નીરવ શાંતિમાં પણ બહુ ફરક છે. આપણે પોતાની સાથે શાંતિ બેસીએ અને શિસ્તને એક એમણે ગુરુ ચાવી કહી છે શિંદેજીએ. પ્રાર્થના બહુ જરૂરી છે દરેક જગ્યાએ. પ્રાર્થના એવું નથી કે આપણે પ્રાર્થના કરીએ એટલે આપણું કામ થઈ જાય, પણ પ્રાર્થના ક્યારેક અશક્યને પણ શક્ય બનાવે છે. દરેક પ્રાર્થના આપણે જો ઈશ્વર સાથે જોડાઈને શાંતિથી આપણે જેવા છીએ એવા આપણી સાથે વાત કરીને આપણે પ્રાર્થના કરીએ તો એ પ્રાર્થના આપણા મનને શાંતિ આપે છે. અહીંયા કોઈ ભૌતિક વસ્તુ મેળવવાની વાત નથી કે આટલા મંત્રો કરીએ એટલે આપણને આ મળી જશે, એમ નહીં. પણ આપણી પોતાની શાંતિ મેળવવા માટે થઈને પ્રાર્થના એક ખૂબ જ મોટું હથિયાર છે. ત્રિવેણી દ્વારા મને આટલું સરસ સબ્જેક્ટ ઉપર બોલવાની અને ટ્રાન્સલેશન કરવાની જે તક મળી એ બદલ તરલભાઈ મુનશીનો અને અર્ચનાબેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. કદાચ કંઈક ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો એ સંસ્કૃતનું એટલું બધું નોલેજ નથી એટલા માટે થઈને. થેન્ક યુ વેરી મચ. थैंक यू बहुत सरस रहे. अर्चना जी प्लीज गो अहेड. अब हम आगे बढ़ते हैं। पंच प्राण वायुस के बारे में बात करेंगे, जो पंच महाभूत हैं, जो हिंदू दर्शन और योग में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। पंच प्राण यानी 5 जो वायु हैं, मानव शरीर में 5 प्रमुख वायु या प्राण ऊर्जा का प्रवाह है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट कार्य और शारीरिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उदान वायु यानी उसका स्थान है गला से सिर तक। उसका कार्य है ऊपर की ओर गतिमान ऊर्जा करना। भाषण, श्रुति, सेवन, इच्छा शक्ति, प्रयास, मानसिक शक्ति, संतुलन, बोध और बुद्धि को ये नियंत्रित करता है। ये है उदान वायु। उदान वायु। अब आता है प्राणवायु। प्राणवायु उसका स्थान है छाती और उसका कार्य है जीवनदायिनी ऊर्जा देना, जीवन शक्ति, श्वसन, परिसंचरण, संवेदी यानी मोटर कार्य, शरीर का तापमान, भावनाएं और ये सोच को नियंत्रित करता है। तीसरा समान वायु, उसका स्थान है पेट। उसका कार्य है अन्य 4 वायुओं को संतुलित करना, पाचन, वितरण, पोषण और एकीकरण यानी इंटीग्रेशन में मदद करता है। व्यान वायु, उसका स्थान है पूरा शरीर यानी अपनी शरीर की आभा। कार्य है विस्तृत ऊर्जा, गति,
नसें, दिल की धड़कन, परिसंचरण, जोड़ों और मांसपेशियों में सहायक होना। पांचवा, अपान वायु। इसका स्थान है श्रोणि से पैर तक और उसका कार्य है कि नीचे की ओर गतिमान ऊर्जा, उत्सर्जन, पेशाब, मासिक धर्म, स्खलन और बच्चे को जन्म की नियंत्रित करने वाले। ये पंच महाभूत और शुद्धि मंत्र की छवि नीचे में दिया गया है। संस्कृत मंत्र 5 तत्वों के शुद्धिकरण से संबंधित है, जिन्हें पंच महाभूत कहा जाता है। ये जो श्लोक है ओम शब्द स्पर्श रूप वाला, उसमें इसका अर्थ ये होता है, ओम पृथ्वी, जल, प्रकाश यानी अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व मुझ में शुद्ध हों। मैं प्रकाश स्वरूप, दोष रहित और पाप रहित हो जाऊं। स्वाहा। अवधारणा का ये भाग बताता है कि हमारा शरीर लगभग 60% पानी और 21 आवश्यक तत्वों से बना है। इसीलिए आंतरिक ईमानदारी यानी इनर इंटीग्रिटी के लिए इन तत्वों का सामंजस्य, हार्मोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। यह इस बात पर और जोर देता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि इसी का एक हिस्सा हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे सितारों से हमें आयन यानी लोहा मिलता होगा, समुद्र से कैल्शियम और हवा से कार्बन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पंच का तो को कहते हैं कि तो आप ये 5 तत्वों से यानी आप प्रकृति से अलग नहीं हैं। आप इस प्रकृति की चलती फिरती स्मृति हैं। आप पृथ्वी हैं। और उन्होंने एक बहुत सुंदर कोटेशन यहाँ कहा कि किसी ने एक बार कहा कि पानी का नकली फूलों पर कोई असर नहीं होता, और ये बात उन्हें बहुत चुभी। वास्तव में इंसानियत से फूल या इंसानियत का फूल इंसान है, और नकली फूल क्यों हम बने, इसके बजाय हमें उत्तम फूल बनना चाहिए। अब आते हैं 5 तत्वों की ओर। हवा, आग, पानी, पृथ्वी। हमें पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि तो मिले हैं, देखे हैं, लेकिन एक 5वां अदृश्य है, वह है ईथर। ये प्रकाश, श्रुति और ध्वनि का वहन करता है। ईथर ये कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि एक कंपन है, और ये हमेशा हमें इससे ट्यून करने के लिए बुलाता रहता है। ये याद रखने का अभ्यास है कि आप वायु हैं, और निरीक्षण करें, श्वास लें, ध्यान केंद्रित करें और फिर निर्णय लें। यदि आप याद रखें कि आप अग्नि हैं, तो आप बुरे विचारों को जला दीजिए, उसे वश में कर दीजिए, अनुकूलन करें और प्रज्वलित करें। अगर आप याद रखें कि आप जल हैं, तो आप रोएं। रोना बहुत शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। शुद्ध करें, या तो बहे या तो बह जाने दीजिए। अगर आप याद रखें कि आप पृथ्वी है, तो आप जमीन से जुड़े रहिए, उसे बनाएं, ठीक करें, क्योंकि धरती बनाती है। याद रखें कि आप वो आत्मा हैं जो सुनने और जानने के लिए जुड़ती है। उन्होंने शिंदे जी ने जो पिछले त्रिवेणी में हुआ था, लाहिरी महाशय ने एसोटेरिक महाभारत के पात्रों का उनका गूढ़ अर्थ उन्होंने यहाँ बहुत सुंदर तरीके से लिया है कि उन्होंने कहा कि अर्जुन अग्नि है, भीम वायु है, युधिष्ठिर ईथर है, नकुल जल है और सदैव पृथ्वी है। द्रौपदी द्रौपदी कुंडलिनी है, दुर्योधन हमारा अहंकार है, और कौरव जो 100 के हिसाब से है वो हमारी संवेदनाएं। अब यहाँ दूसरा श्लोक आता है, ओम शब्द स्पर्श रूप वाला। इसमें 5 नेक्स्ट था, मुझ में 5 गुण, ध्वनि, अच्छा सो इसमें एलिमेंटल हार्मोनाइजेशन का उन्होंने बहुत ही सुंदर तरह से ये बनाया, जो मैं एक स्लाइड को देख के बताती हूँ कि जो धरती है वो हमें जुड़ी रखती है, हमको एक स्थिरता देती है, एक हमें जीवन देती है। पानी है, वो बहता रहता है हमारे इमोशंस की तरह, हमारी यादों की तरह, और हमें साफ करता जाता है, स्वच्छ करता जाता है, शुद्ध करता जाता है। हवा है जो घूमती रहती है, वो हमें हमें सांसें देती है, हमें कम्युनिकेशन यानी जो बातें करना है वो करती है, हमारे हायर माइंड का स्पिरिट है। चौथा फायर,
अग्नि जो जलाद के अलग स्वरूप में देता है, वो हमारा खुद का एक विल पावर, यानी हमारा विल पावर है, अब याद नहीं आ रहा शब्द। अर्थ तो बहुत ही सुंदर से लिखा है, धरती हमें जोड़ी रखती है, पानी हमें बहाता है, अग्नि हमें बदलती है, वायु हमें स्वच्छ करती है, और मैं, आई स्टैंड एज स्पिरिट, मैं एक आत्मा के रूप में हार्मोनाइज, सबके साथ एक संतुलन के साथ, एक सामंजस्य के साथ, एक कोहेरेंस के साथ, मैं एज ए स्पिरिट, मैं आत्मा हूँ। अब ये 5 गुण वाला स्लाइड है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक बालक का स्वरूप लिया है और रखा है, और बताया उनके कि ये 5 गुण, ध्वनि, स्पर्श, रंग, स्वाद और गंध, ये सब शुद्ध हो। मैं प्रकाश हूं, मैं दाग से मुक्त हो जाऊं, पापों से मुक्त हो जाऊं, स्वाहा। 5 गुणों की शुद्धि का अर्थ है कि कान ध्वनि के प्रति संवेदनशील हो जाए, त्वचा स्पर्श के प्रति संवेदनशील हो जाए, आंख रंग के प्रति संवेदनशील हो जाए, नाक गंध के प्रति संवेदनशील हो जाए। जब हम कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हम तीनों लोकों में सक्रिय होते हैं, मानसिक रूप से विचार के माध्यम से, भावनात्मक रूप से इच्छा के माध्यम से, और शारीरिक रूप से क्रिया के माध्यम से। तो यहाँ पहला पार्ट खत्म होता है। दूसरा पार्ट 1 का दूसरा भाग, पार्ट 2 बाद में आएगा। अगले वीक पार्ट 2 आएगा। और अभी मंच खुला है, क्योंकि अर्चना जी भूल रही थी, इसलिए मैंने कार्यभार संभाल लिया उसका। और बहुत बढ़िया शिंदे जी, अच्छा है कि पार्ट 1 को भी हम 2 भागों में ले रहे हैं। तो ये मंत्रों का समझ है। और विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। ये तो अक्सर पूजा बहुत अच्छे से वहाँ कराती हैं। तो अगर कुछ उच्चारण में और उसमें कुछ वो हो और आप मंत्र पढ़ना चाहें, तो मैं कहूँगा कि एक बार मैं स्लाइड दिखाऊंगा, आप मंत्र पढ़ देंगी शुरू से। हाँ जी। अरेगा भैया। आपको दिख रहा है वहां पर? हाँ, देख रहा है। ओके, तो मैं ये स्लाइड एक के बाद एक करता हूँ, आप खाली संस्कृत पढ़ दीजिएगा, तो सबको एक शुद्ध उच्चारण। ओके ओके। या स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट। हा संकल्पः अध्वर्युः हरिः ओम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्ष्यं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ सूर्यश्च मामन्यश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्ष्यन्तां यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्नाम् रात्रिस्तदवलुम्बतु यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहं माममृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। तारक मंत्र। ओके। ॐ प्राणापानौ यानो दानसमानामि शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विभाप्मा भूयासं स्वाहा। ॐ पृथिव्यप्तेजो वायु आकाशामि शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा। ॐ शब्द
स्पर्श रूप रस गंधामि शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा। That's all. Thank you so much. Okay, thank you. Thanks for giving me an opportunity. No, you are the few people who do भारत समाज पूजा। और अभी जब 100 ईयर सेलिब्रेशन हुआ तो Yeah. एक पूजा जो है वो शिखर जी ने की, दूसरी पूजा आपने की, और तीसरी पूजा किसी और ने की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ शुद्ध उच्चारण वाले लोग हैं। और जो प्रभाव है उस मंत्र का, वो जब वो बोले जाते हैं तो होता है। अर्थ शिंदे जी ने बहुत अच्छे से समझाया। तो पहले अर्थ समझ के जब हाँ। आपने बोला तो वाकई में हम लोगों के अंदर सारा चीज उतर गया कि कौन से श्लोक का क्या मतलब। तो आपको उपस्थिति देखकर मुझे सूझा कि आपको यहाँ पर बोलना जरूरी है। जी 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 जी। यस थैंक यू। कुमार जी, शीतल गोले जी, आपने भी हाथ ऊंचा किया था। बोलिए नंद कुमार जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी, नमस्ते। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, थोड़ी सी ऐसी बीच बीच में लेते रहती हूँ, अच्छा, तबीयत बोलिए। बिगड़े ना करके। अच्छा, मुझे शिंदे जी से पूछना है जी कि उन्होंने वाटर और ऑनेस्टी के बारे में बताया। तो शिंदे जी ने कहा कि ऑनेस्टी वाटर जैसी है, तो वो कैसे? क्योंकि मुझे लगता है ऑनेस्टी स्टडी है, तो उसे क्या आप समझा सकते हैं शिंदे सर? We can flow in our life only with the honesty. Otherwise, our flow is blocked. So, flowing nature is of water. Water makes us to flow. So that meaning is there. Okay. Okay. I might not have. आपने जो प्रश्न पूछा वो एक बार रिपीट कीजिए तो आपको आंसर समझ में आएगा। बोलिए, आपने क्या पूछा कि? नहीं, वही शिंदे जी ने सही बताया है कि उन्होंने जो बताया वही उन्होंने बताया कि ऑनेस्टी फ्लो है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनेस्टी ऑनेस्टी फ्लो कैसे हो सकती है, ऐसा ऐसा मेरा कहना है। ठीक ठीक, समझ गए। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न था। और Honesty नहीं flow होती, हाँ, our वही life flows. यस। Otherwise, it's stuck. ओके ओके। मेरे ख्याल से ऐसा उदाहरण दे सकते हैं क्या शिंदे जी, के ऑनेस्टी समझ लो एक सत्य की नाव है जो जिंदगी के प्रवाह या नदी में बहती रहती है और स्थिर रहती है, क्योंकि वो सत्य यस है। जी यस, ऑनेस्टी स्थिर, वही जी मेरा कहना है। जी जी। हाँ, राहुल साहब, आप कुछ बोल रहे थे। हा शिंदे जी, शिंदे सर, हाँ बोला। नमस्कार। तुम्ही नमस्कार. खूप छान उत्कृष्ट पद्धतीनं भारत समाज पूजेचं टेक्निकल आणि त्यातले अर्थ स्पष्ट करून सांगितले. त्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत, ज्या थोड्या मनामध्ये प्रश्न होते, ते सर्व सुटले आता. थँक्यू. खूप छान लेक्चर झालं. धन्यवाद धन्यवाद. वाह वाह वाह, ये भी सही शिंदे बात। सरांनी भारत समाज पूजेचा एक आणखीन एक आयाम प्रस्तुत केला. तो शिंदे सर नेहमीच वेगळं काहीतरी सांगत असतात, जे साधारण लोकांना अजून समजत नाही. त्याच्यामुळे येस, खूप छान खूप छान. नाही, मी नेहमी with different perspective I think over it. That's what. दुबाल I जी। may be wrong, but I think in that way. हाँ, अर्चना जी बोलिए, आपको कुछ कहना है? आ, हाँ, मुझे पहले तो धन्यवाद तो देना ही है शिंदे जी को, कि मैंने एज ए मॉडरेटर जब शुरू किया तब मुझे जब भी भारत समाज पूजा देखते हैं तो हम उसमें बह जाते हैं। हम उसमें पता नहीं क्या क्या आंदोलित हमको कर देता है। हम एज एन थियोसॉफिस्ट में, मगर जो मुझे अवसर मिला कि मैं नोट्स पढूं, आपको सुनूं और ये एक सब साथ में करूं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्योंकि मुझे भारत समाज पूजा में मजा क्यों आ रहा था, क्यों मुझे वो टच कर रहा था, क्यों मुझे वो आंदोलित कर रहा था।
क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे ये कारण हैं। तो मैं आपको खूब खूब धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी सुंदर तरीके से समझाया। आई एम ईगर फॉर पार्ट 2 नाउ। तो मेरे ख्याल से पार्ट 2 आप ही करिएगा। हाँ, थैंक यू। गुड गुड गुड, थैंक यू। एंड राजेश्वरी भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हाँ, वो इसीलिए कुछ कुछ लोग जो कुछ कुछ चीजों को बहुत विस्तृत तरीके से समझाते हैं, तो मेरा हाँ, पहला चॉइस यही रहता है कि वो लोग आए। मैं ये जो अवनीश जी थे वो भी बहुत आतुर थे भारत समाज पूजा करने के लिए, और पूरा ट्रांसलेशन उन्होंने वर्ड फाइल में टाइप करके दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने जॉब के कारण एक गांव में फंस गए जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा अच्छा। ये जितने मिनट भी कनेक्टिविटी आई वो व्हाट्सएप के ऊपर वो नोट्स भेज सके, बस इतना हो गया। तो वो तो अर्चना अभी मैंने सिर्फ पढ़ दिया, मगर अगली बार मैं तैयारी के साथ आऊंगी। अर्चना जी बहुत अच्छी बोल रही है, इट इज स्पॉन्टेनियस बट वेरी नाइस। यस दुबल जी। Puja is really an excellent subject you have chosen today, because we also perform such so many years every Sunday, and the Jiddu Krishnamurti has selected this for composition of various mantras from different Upanishads is really remarkable, and the objective was to unify the various people in India, particularly from various religions, various sects, various day we pray. So the objective was to unify, because universal brotherhood was in the mind. That is why the selection was done for the temple of light. We only keep the light. And the notable Bharat Samaj temple exists in Adyar also. And when we do the puja, we just keep one light, that one deepak. And the significance, it was developed to connect the Theosophical Society with Indian nationalism and Hindu revitalism through ritualistic practices, blending traditional Hindu elements with Theosophical principles. And it is proud that 100 years of Bharat Samaj Puja will be celebrated. And as explained by Sindhyaji and other translators, it was really inspiring, because five vital elements, Pancha Mahabhut, are there everywhere. If you see, in that purification is imparted through such puja is really inspiring, and it is really good that such subject was chosen. And second part will be also very interesting. Thank you very much from Sindhyaji to Karan Munshi and all the translators. Thank you. थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। या तरन एनीवन सुषमा तरन जी? जी, हाँ, विजय लक्ष्मी जी का पूरी पूजा यूट्यूब पर है क्या? कौन बोल रहा? अच्छा, शीतल जी बोल रहे हैं। शीतल जी, अभी क्या है कि हम लोग ये भारत समाज पूजा के 100 ईयर्स के सेलिब्रेशन में गए थे, तो जो तीनों पूजा का मैंने उल्लेख किया है वो तीनों का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, और ओ- वो मैं अपलोड करने वाला हूँ पहले हमारे इंटरनेशनल अथॉरिटीज को, उसके बाद फिर मैं अपने यूट्यूब पर भी रखूँ। तो ओके पूरा ओके। पूरा मतलब शिखर जी का, ये हाँ, लक्ष्मी जी का, और एक और थे अपने ये अ, कौस्तुभ जी जो पूना में है, हाँ, उनका उन्होंने भी। उन्होंने भी तो तीनों पूजा पूरी तरह से की है। नॉट ओनली दैट, जो अभी हाँ, शिंदे जी कह रहे हैं, उस तरह वहां पर 5 वक्ता और थे जिन्होंने अलग अलग भागों को एक्सप्लेन किया है। तो वो भी मेरी कोशिश है कि मैं पार्ट पार्ट करके उसको एडिट करूं, और लगभग सब पूरा हो गया है। क्योंकि 3 दिन की पूजा, यानी आप समझ लीजिए 8 घंटे इंटू 3, तो 24 घंटे को एडिट करना, अलग अलग भागों में बांटने में थोड़ा सा दिन लगते हैं। और बीच में कुछ और भी कार्यक्रम आ गए तो गोल रिव्यू के लिए भी जाना पड़ा। तो ये सब और चीजें आपको। आपको बहुत अच्छे से वो मिलेगी, और अच्छा अपने त्रिवेणी चैनल में भी मिलेगी, और इंटरनेशनल का जो यूट्यूब है वहां भी मिलेगी। ठीक है जी? अच्छा। हाँ ओके। जी। एनीवन एल्स? Malti Pandurang is there. First time she is attending. She want to say something. जी ने लिखा है, पर अगर उनकी आवाज I सुनने have, को मिल I, जाए तो मजा I आएगा। have Yeah, seen let it her. many times and I have enjoyed it, but today it was very elaborately explained. So Yeah, thank
another kind of satisfaction. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सुषमा जी ने लिखा है कि बहुत अच्छा, तीनों स्पीकर्स के एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन था, और शिंदे जी को थैंक्स किया है इतना इंसाइटफुल एक्सप्लेनेशन के लिए। अरुणिमा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? खन्ना साहब और कोई कुछ कहना चाहता है, या फिर मैं इनवाइट करूं? दुबल जी ने हाथ रेस किया है। हाँ, दुबल जी बोलिए। यूट्यूब पे नवीन कुमार का है पूजा, कंप्लीट पूजा by Brother Naveen Kumar. So we are using many times that on YouTube. Couldn't get it. क्या बोला? Brother Naveen Kumar has put on YouTube Bharat Samaj Puja. हाँ, It is there. नवीन जी ने डाली है भारत समाज पूजा भारत यूट्यूब। समाज का करीब करीब 8 से 10 लोगों ने डाली हुई है, जैसी होती हैं। और ये जो 100 ईयर की सेलिब्रेशन की पूजा है, वो भी पूरी तरह से एक एक विधि को क्लोजअप में लिया गया है, किस तरह से पानी होता है, ये सब। तो आपको और एक थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाएगा। थैंक यू। अतुल भाई आ गए। अतुल भाई, समापन की ओर चले। अनम्यूट अनम्यूट। Today's meet will be concluded by Shanti prayer performed by Archana Munshi. ओम सर्वे वै सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।